बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में, जो कि पीपीएससी एफपीएससी किसी भी वन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करनी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये जो लेक्चर है बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो लोग पीपीएससी एफपीएससी वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज़ हैविंग अ कॉमन टर्मिनस आर बाउंड्री, कि एक कॉमन टर्मिनस या बाउंड्री जिसकी हो सो क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉटर्मिनस। हैविंग अ फुल आर डीप साउंड, दैट इज़ कॉल्ड सोनरस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि इंग्लिश में जो है इनसे एमसीक्यूज़ बनते हैं। ग्रामर में जो 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन होता है उसमें ये आते हैं 4 नंबर के। नेक्स्ट इज़ हैविंग अ सिमिलर नेचर, कॉमन इंटरेस्ट, जिनके कॉमन इंटरेस्ट दैट इज़ कॉल्ड कंजीनियल। Having a vague desire, that is wistful. Next is having the same source or origin, it means cognate. That is next is hiding of true feelings, means dissimulation. In a primitive or uncivilized state, it means savage. Incur loss through some fault, that is forfeit. Identical in all respects, that is congruent. Next is indirect effect or remote effect of some event, that is called repercussion. Next is instrument for measuring the intensity of light, that is called photometer. आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करनी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और आपको इस चैनल पर पीपीएससी एफपीएससी इंग्लिश लेक्चरर की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। जो लोग इंग्लिश लेक्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू की लिस्ट भी कंप्लीट पड़ी हुई है। Next is interrupt and ask troublesome questions, that is called heckle. Interrupt the proceeding and demand a statement or explanation from, it means interrelate. Next is judicial process or order to stop something, it means injunction. काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। Killing of one's husband, it means mariticide. Next is lacking in sexual power or sufficient strength to do something, it means impotent. Next is loss of ability to use speech or understand, it means aphasia. Make a deep sound of pain, it means groan. Make desolate, it means devastate. Next is make something misleading, additions to a book, it means interpolate. Next is military forces and their equipments is called armament. Next is miscellaneous articles not listed separately, it means sundries. Next is money in form of coins, it means specie. Name derived from father's name, it means patronymic. Next is natural tendency to do something, it means propensity. Next is noisy drinking party or merrymaking, it means carousel. Next is not showing proper respect, it means impertinent. Next is occurring here and there, or now and then, of, or for all. Next it means sporadic. Next is of the daytime, it means diurnal. Next is of all sorts, it means omnifarious. Next is one preying on or exploiting others, इसका substitute है predator. Next is one who arranges for the supply of food in a club, school, etc., it means steward. Next is one who courts or woos a woman, it means suitor. Next is one who explains a theory, idea, etc., it means is called exponent. Next is the last one is one who habitually relapses into crime or one who cannot be cured of criminal activities, it is called recidivist. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.